স্যার, আমি বাংলার প্রতিনিধি, তাই স্বাভাবিকভাবে পশ্চিমবঙ্গে যখন ভয়ানক নারকীয় বিভৎস ঘটনা ঘটে তখন আমি চুপ করে থাকতে পারি না। পশ্চিমবঙ্গে আজ সকালবেলায় মানে গতকাল রাত্রে মানে আজকে ভোরবেলায় 10 জন মহিলাকে পুড়িয়ে মেরে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে 2 জন শিশু ছিল। তো আমি তার জন্য স্যার আজ এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছে এই কারণে যে পশ্চিমবঙ্গে আজ সন্ত্রাস, খুন, লুট আর যে ভয়ঙ্কর আকার নিয়েছে সারা দেশের মানুষকে তা আজকে অবাক করে দিচ্ছে। আমি তার নিন্দা করছি। এখানে দাঁড়িয়ে 10 महिला को आग के हवाले में डाला गया, सारे को मौत हो गया, 2 बच्चे समेत। इस तरीके की दहशतगर्द की घटना बंगाल में चल रही है। इसीलिए मैं স্যার আমি নিরুপায় হয়ে বাধ্য হয়ে এই বিষয়টা এখানে তুলতে চাইছি এই কারণে, কারণ কাউকে না কাউকে তো বলতে হবে। ভারতবর্ষের সব থেকে বড় পঞ্চায়েতের নাম পার্লামেন্ট, এখানে যদি না বলি তাহলে কোথায় বলবো? আজকে পশ্চিমবঙ্গে মানবরাজ নয়, পশ্চিমবঙ্গে দানবরাজ চলছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্রনাথ নজরুলের সাহিত্য গ্রন্থের পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের নৃশংস ঘটনা ঘটছে, আমাদের সকলের হাড় হিম করা ঘটনার সাক্ষী पार्टी। प्लीज आप विषय पर ही बोलिए, डिमांड्स पर बोलिए आप। सर प्लीज, सर आई rise to intervene into the subject civil aviation, which has already been vetted and examined by the concerned standing committee thoroughly, and they have also revealed their own observation insofar as deficiencies, lacunas of these sectors are concerned. That there is no doubt that Government of India had embarked upon a massive evacuation effort so as to evacuate our stranded people, including students from Ukraine. So they are deserved to be applauded along with private airlines and air forces. But in the same vein, I would like to flag the attention of this government that the chaos and consternation in regard to the evacuation of stranded people could have been averted provided we had taken a little more proactive measures. So I think the situation was precarious. Given the intensity and the precarious situation prevailing over there, government could have been more proactive. However, there is no doubt that it was a large-scale humanitarian approach taken together by civil aviation, defense and external affairs. Certainly, it is deserved to be applauded. I would like to know from the Honorable Minister whether और कोई बचे हुए हैं क्या वहां जिनको इवैक्यूएट करना पड़ेगा? ऑपरेशन गंगा क्या खत्म हो चुकी है या ऑपरेशन गंगा अभी भी चल रहे हैं? ये जानकारी हमें थोड़ा देने से अच्छा होगी। सर ये I do not want to harp on the same issues, but tangentially I would like to touch upon 2-3 pertinent points akin to the concern of my esteemed colleagues. Although budget estimate 2023 shows an increase in its budgetary allocation from B 2020, 86.81% of the budget has been allocated toward the single purpose of servicing loans passed on to the SPV for the disinvestment of Air India. This leaves only 13.2% of the budget or rupees 1407.09 crore for the MOCA. The RE 2022 allocation rose to rupees 72,652 crore, of which rupees 68,501 crore was kept aside for the Air India disinvestment process. It is not my personal opinion. I have already stated that
the standing committee which had scrutinized the nooks and corners of the civil aviation sector, they had pointed out that this is the situation. So far as Uran is concerned, yes, Uran is a great connectivity program, there is no doubt of it. Lekin, Airports Authority of India, 948 routes various bidders को दिए थे in its 5-year term. Out of 948 routes, only 405 of these routes are operational as of December 2021. This includes 65 airports, 2 water aerodromes, and 8 helipads. This means in 5 years, only 42.72% of this flagship scheme's objective has been completed since its inception. Again, I would like to point it out that 1 out of 4 Uran routes succeed without government subsidy, pointing to a glaring lapses in the scheme's effectiveness and viability. Lack of industrial enthusiasm, which is also observed, because MOCA floated 106 direct tourism routes for bidding. However, as of February 2022, bids for only 46 routes were received and only 31 have been operationalized. This lack of enthusiasm from the ministry, from the industry, is a reflection of the Uran scheme's failure. So, I think that government will certainly pay its due attention to this issue because it's a great connectivity approach that I have already admitted. Insofar as security of civil aviation sector is concerned, I would like to flag the attention of this government that DGCA, PCAS, AAIB, all have been allocated below their projected demand. Sir, Information and Credit Rating Agency, ICRA, determination of Indian aviation industry. ICRA has stated that the sector's recovery is likely to remain weak, with the domestic aviation industry expected to lose as much as rupees 25,000 crore to rupees 26,000 crore in financial year 2022. The losses have been attributed to 3 things in particular: the effects of the pandemic, suspended state of international flight, and the state of rising aviation turbine fuel. Domestic ATA prices. Domestic airlines are expected to incur a loss of 14,000 crore to rupees 16,000 crores in financial year 2023. Considering this, it is estimated that the industry will require additional funding of approximately 20,000 to 22,000 crores between financial year 22 and financial year 2024. ICRA expects the Indian airline industry to hit a debt of rupees 50,000 crores in financial year 2022. I do not know the exact situation, so I would like that Minister may explain of the observation made by ICRA. Sir, there is no doubt of the fact that the aviation sector has been registering exponential growth, which suggests there is a huge potentiality of this sector in our country. However, per capita availability of aircraft is still poor. Number of issues are there that needs to be rectified, that needs to be amended. In this regard, I would like to draw the attention and also try to make some suggestion to the concerned ministry that in India, there is a wave of regulations that regulate various aspects of the aviation industry. India is the world's fastest growing domestic aviation market. Therefore, it is expected that Indian carriers will need many new aircrafts. India is therefore seen as an attractive market for aircraft manufacturers, financiers, and lessors. However, in the international aviation finance and leasing practice, there exists uncertainty
regarding the possibility to repossess, deregister, and export an aircraft in the case of default of an Indian airline or other operator. The Kingfisher episode reiterated this perception and sent a shockwave across the global finance and leasing practice, bringing many negative reviews for India. This forced the financial world to take a more cautious approach towards Indian carriers. This has resulted in Indian airline operators being charged higher lease rentals and security deposit to make up for this transaction risk. Although the manner in which the shutting down of the jet airways has been managed by the government is really commendable, there is still much work that needs to be done. Cutthroat competition. Indian domestic aviation market is known as one of the most competitive and price-sensitive markets. Indeed, it was recently pointed out by CAPA India that the competition dynamics of the Indian aviation market are not in line for long-term viability of this sector. It is predicted by CAPA that India may witness consolidation of various domestic airlines into 2 to 3 groups or cartels, which may then come with its own legal complication from an antitrust perspective. So this kind of cartelization, there is a possibility of cartelization in this sector, which also need to be preempted and need to be addressed. I will also suggest simplifying the regulatory structure. Various laws governing aviation be brought under one umbrella code that should have a non-obstante clause ensuring primacy of the specialized aviation code over other laws of the land. Lastly, aviation industry in India is controlled and regulated by various regulators. For example, the Director General of Civil Aviation, the Airports Economic Regulatory Authority, Airports Authority of India, and the Bureau of Civil Aviation Security, just for regulating one sector, that is aviation. The need of the hour is to amalgamate and merge all these regulators. Try to amalgamate and merge all these regulators into one civil aviation authority, which shall have the overall regulatory and superintendent oversight over the aviation industry. This will not only reduce the regulatory fatigue, which is often experienced by the industry, but shall also serve as a single window clearance authority, thereby reducing the operational cost for the industry. Sir, हम सब जानते हैं कि एटीएफ की चलते जो एटीएफ 40% ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए माना जाता है, ये एटीएफ की चलते हमारे सिविल एविएशन की हालत खस्ता होते जा रहे हैं। तो ये एटीएफ को कम से कम जीएसटी की दायरे में लाया जाए, ये हमारे बहुत सारे मेंबर भी मांग किया है, मैं भी मांग कर रहा हूं सर। और दूसरी बात यह है सर, हो गया, दूसरी बात यह है कि हमारे देश में ये सेक्टर की जितनी तरक्की होते हैं, जितनी वृद्धि होते हैं, उसके साथ हमारे जो जरूरत होते हैं ये पायलट की, ये टेक्नीशियन की, दूसरे स्किल मैन पावर की, वो हम तय नहीं कर पाते। इसलिए 40% हमारा जो कमर्शियल पायलट की जो लाइसेंस ये विदेश से परे हुए लोगों को देना पड़ता। मतलब इसमें काफी पोटेंशियलिटी है, लेकिन हम लोग ये पोटेंशियलिटी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। इसलिए हमें और एटीसीओ की हमें फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जरूरत है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कमती होने से हमारे असुविधा हो रहे हैं। सर, बहुत सारे मेंबर ने यहाँ ये फ्लाइट की जो चार्जेस, जो भाड़ा होता है, इस विषय पे मुद्दा उठाया। मैं ये जरूर मानता हूं कि अगर सिविल एविएशन की बात कहा जाए, सिविल एविएशन ये कहेगा कि सर्विस के साथ पैसेंजर को एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट में चलता है, हमें कोई यहाँ दखलंदाज करने की कोई जगह नहीं है। लेकिन हमारे देश में सब कुछ कमर्शियल एंटरप्राइज को छोड़ देना मुनासिब नहीं समझता हूं मैं, क्योंकि ये एक सर्विस जब है और ये सर्विस जब हिंदुस्तान के आम नागरिक ये सर्विस में हिस्सा लेते हैं, तो हमारा भी ये फर्ज बनते हैं कि इस पे थोड़ा रेगुलेट किया जाए। कॉमर्स, इन द नेम ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ सर्विस, वी कैनॉट अलाउ दोज प्राइवेट प्लेयर्स to please the common passenger of our country
according to their own whims and fancy. सर मैं बंगाल से आते, बंगाल में 2-3 मुद्दा है। बंगाल में एयरपोर्ट कलकत्ता है। कलकत्ता की आज की जो हालात हुई है, अगले दिन कलकत्ता ज्यादा पैसेंजर को सर्विस देने नहीं पाएगी, इसलिए कलकत्ता में एक नया एयरपोर्ट बनाना चाहिए। दूसरी बात, बंगाल की नॉर्थ एरिया में बागडोगरा बोल के एयरपोर्ट है। ये बागडोगरा क्या होता है? भूटान, सिक्किम, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़ता है। हमारे नॉर्थ बंगाल में चिकन नेक जो कहते हैं, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चिकन नेक, ये चिकन नेट बागडोगरा से निकलते हैं। लेकिन ये बागडोगरा में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हो सकता है कि उनका कोई तकलीफ है, लेकिन इसका कोई समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि रात में कोई फ्लाइट लैंडिंग का वहां फैसिलिटी नहीं रहती। बंगाल में कुचबिहार से लेकर मालदा, बालूरघाट, कोंडाल, कलाईकुंडा बहुत सारे कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट बने हुए हैं, जो हम कहते हैं कि ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड नहीं, ब्राउन फील्ड। लेकिन ये सरकार को मैं ये दरखास्त करूंगा कि ये ब्राउन फील्ड जो एयरपोर्ट है, कुचबिहार में है, बालूरघाट में, मालदा में, इसको थोड़ा विकास करने के लिए आप कोशिश कीजिए। ये सारे बात रखते हुए मैं और एक छोटा सा मुद्दा रखना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि अभी टेक्नोलॉजी की मतलब नया टेक्नोलॉजी की तरीका सारे देश, सारे दुनिया अपनाते हैं। जैसे कि 5G टेक्नोलॉजी अभी अपनाने शुरू कर दिया सारे दुनिया ने। ये 5G के चलते बीच में अमेरिका में हमारे फ्लाइट जाने में थोड़ा रुकावट पैदा हुई थी। ये क्या समस्या के समाधान हुई है? 5G तो अभी हमें आदी होना ही पड़ेगा। ये 5G के चलते हमारा उड़ान में कोई दिक्कत होते है या नहीं, ये 2-3 मुद्दा मैं उठाना चाहते हैं। मैं चाहते हैं कि हमारे ILS स्पेशलिस्ट को और तरह तवज्जो दिया जाए। बहुत सारे एयरपोर्ट है जहां ILS फैसिलिटी की कमी होने के चलते हमारे आवागमन में तकलीफ होते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि सिविल सेक्टर, जिसमें हमारे और सारे वृद्धि की और सारे तरीके की काफी संभावना है, ये सिविल एविएशन सेक्टर की जो पोटेंशियलिटी है, इसको तवज्जो देते हुए, सही ढंग से इस्तेमाल करते हुए हमारा देश में बहुत सारे नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को, स्किल मैन पावर को इसमें शामिल करके हम और आगे निकले। ये बातों के साथ मैं अपनी भाषण में विराम देता हूं। नमस्कार। सभा की कार्रवाई बुधवार 23 मार्च 2022 को प्राप्त